Hi students, here I am Simran Kaur, your teacher of science. So today, let's study science of class 7th, chapter 11, that is reproduction in plants. So let's get started. Living organisms undergo asexual, sexual and vegetative propagation. Let us learn about these in detail. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जाते हैं. हम इनको इस चैप्टर में वी विल स्टडी इन डिटेल. ओके, सो फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction is a kind of reproduction in which only a single parent is involved. जिसमें खाली single parent involved होता है, that reproduction is known as asexual reproduction. There are different forms of asexual reproduction like budding, fragmentation and spore formation. These are commonly seen in algae and fungi. Budding. Budding is seen in organisms like yeast. A bulb-like projection protrudes from the body of the parent organism and is called a bud. एक bulb-like projection होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? Bud. This bud continues to grow and finally detaches itself from the parent cell. ये बर्ड ग्रो करता रहता है और फाइनली डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से. द डिटैच सेल देन कंटिन्यूज टू लिव एज अ होल न्यू इंडिविजुअल सेल. वो फिर एक इंडिविजुअल सेल, अलग अपना सेल हो जाता है. द न्यू सेल फॉर्म्ड इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. नाउ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन एल्गी लाइक oscillatoria and spirogyra. The body of the parent organism breaks into fragments and each fragment can grow to function as a new individual. जो बॉडी होती है हमारी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, वो ब्रेक होती है किसमें? फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करती है टू अ फंक्शन एज अ न्यू इंडिविजुअल. नाउ स्पोर फॉर्मेशन. Spores are tiny, spherical, single-celled bodies produced for the purpose of reproduction. Spores क्या होते हैं? बहुत छोटे, spherical होते हैं शेप में, single cell bodies होती हैं. They produce for the purpose of reproduction. They are produced and released from specialized structures of the plant body. These spores can remain dormant during harsh weather conditions. ये जितने भी spores हैं ये alive होते हैं but active नहीं होते during the harsh weather conditions. They grow into a new plant under favorable conditions. Mosses, ferns, fungi, etc. reproduce by this method. इसी method से ये सब reproduce होते हैं. This is the fragmentation in oscillatoria. This is the fragmentation in spirogyra. And these are the spores under the leaflets of fern. Now the term is vegetative propagation. Have you noticed small projections or green shoots coming out from potatoes or onions? हमने कभी देखा है ना, जो अनियन होता है, पोटैटोज होते हैं, उसके बीच में से green shoots आ रही होती हैं. They can grow into new plants. New plants are found to grow from the vegetative parts of the parent plant such as root, stem or leaf. This type of reproduction is called vegetative propagation. New plants हम found किए जाते हैं to grow फ्रॉम दी वेजिटेटिव पार्ट्स. किससे? पेरेंट प्लांट से. क्या है वो? रूट है, स्टेम है या लीफ है. नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली एंड कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय आर्टिफिशियल मीन्स. ये नेचुरली भी प्रोपगेशन हो सकती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियली भी. नाउ वी विल लुक एट सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल मीन्स. फ्रॉम स्टेम्स. New plants can grow either from horizontal stems or from underground stems. Some types of vegetative propagation through horizontal stems are discussed below. ये जितनी भी vegetative propagation है, they are through horizontal stems. Runners. Runner is a slender branch that creeps some distance away from the mother plant on the ground, roots itself at the nodes and grows into a new plant. And examples of runners are wood sorrel and grass. Now stolons. Stolons are lateral slender branches. ये कैसी होती हैं? Lateral slender branches that arise from the base of the stem. जो base होता है stem का, वहाँ से ये arise होती हैं. Stolons initially grow upwards and slowly drop to the ground. कैसे grow होती हैं ये? Upwards, ऊपर की तरफ.
These stems roots at the nodes, producing buds that soon grow into daughter plants. And examples क्या है? What are the examples? Wild strawberry and peppermint. Now offset. An offset is a short horizontal branch that arises from the axil of a leaf. The branch elongates to a certain length and then produces leaves at the node and a cluster of roots that fix to the ground. Branch जो elongate हो जाती है एक certain length तक होती है, फिर वो प्रोड्यूस करती है लीव्स कहाँ पे? एट द नोड, एंड द क्लस्टर ऑफ जो रूट्स होती हैं वो फिक्स होती हैं टू द ग्राउंड. द ऑफसेट देन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. ऑफसेट क्या होता है? फिर वो ब्रेक हो जाता है मदर प्लांट से, लीविंग इनटू डॉटर प्लांट विच देन ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी. एग्जाम्पल इज वाटर लेट्यूस. दिस इज द रिप्रोडक्शन इन एन ऑफसेट plant. Now these are suckers. Suckers grow from the underground part of the main stem. Suckers कैसे grow होते हैं? Underground part जो होता है main stem का वहाँ पे. Develop roots underground and then grow obliquely upwards, giving rise to new plants. An example is chrysanthemum.